अभी जो मैंने आपको 9 जगह का सीक्वेंस दिखाया वो हमने अपनी कूर्ग सीरीज के ब्लॉग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एज फॉर द थर्ड एंड फाइनल पार्ट, उसमें हम 4 जगह कवर करने वाले हैं। Now we are finally at the fort. The history about this place I'm going to tell you as I take the tour, as I take you on the tour. Madikeri Fort hexagonal shape में बना है, built over 20 acres of land with the Madikeri Palace at the center. Fort 17th century का बनाया हुआ है by the then Haleri dynasty king Muddu Raja. फिर it was attacked by Tipu Sultan and under his rule came to be known as Jafrabad. उसके बाद लिंगराजा वोदियार II made renovations of his own. फिर Britishers ने take over कर लिया and they again added modifications like the clock tower and the church. Present day Madikeri Fort में you can actually get a sense of all of these styles. So after a bike ride of about 45 minutes and 27 odd kilometers, we are at the Dubare elephant camp. और अब हमें ये रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है टू गेट टू द कैंप। पर एज इट टर्न्स आउट हमसे बड़ा कोई नमूना नहीं है। वी हैड चेक्ड कि वो सुबह 9 बजे खुलता है एंड अज्यूम्ड कि दिन भर खुला रहता है, पर असल में वो सुबह 9 से 11 और शाम में 4:30 से 5:30 बजे ही खुलता है और अभी 11:30 AM हो रहे हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एंड देन इन द इवनिंग वी विल कम बैक टू दुबारे एलिफेंट कैंप अगेन। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। लोग अभी निकले ही थे दुबारे एलिफेंट कैंप से और बारिश थोड़ी तेज हो गई है फॉर आवर लाइकिंग, तो वापस से बारिश थोड़ी थमी है और हम दोनों वापस निकल गए रोड पर। Round 2 of going through rain was even worse. अभी भी बारिश रुकी नहीं है, बट हमने सोचा that we should move on अगर हमें बाकी सारी जगहें कवर करनी है। Now we are going to the Namdroling Monastery. Let's see if the rain gods are with us or not. So finally हम Namdroling Monastery पहुंच गए हैं। अपनी स्कूटर पार्क करके अब हम अंदर जा रहे हैं। तो 1 बजे ओ भाई, मारो मुझे, मारो। हम पागल हैं जो घूमने निकले। पहले सड़ी गर्मी में 50 मिनट स्कूटी चलाकर हम एलिफेंट कैंप पहुंचे जो बंद निकला। उसके बाद बारिश में भीगे और नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री पहुंचे और यहाँ ये कह रहे हैं वीडियो नहीं बना सकते। Who said content creation was easy? Okay. In any case, let me take you on this amazing tour of Namdroling Monastery, also known as the Golden Temple. नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री टिबेटियन बुद्धिज्म के नियंगमा लीनिएज का सबसे बड़ा टीचिंग सेंटर है दुनिया में। मॉनेस्ट्री 1963 में एस्टैब्लिश हुई थी एंड नाउ इज अ होम टू अबाउट 5000 monks एंड nuns। मॉनेस्ट्री प्रेमिसेस पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और लिविंग क्वार्टर्स भी हैं। डू नोट, नॉट एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू द विजिटर। मेन टेंपल में 3 स्टैचूज हैं, जिसमें बीच में है बुद्धा शाक्यमुनि, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। लेफ्ट में है गुरु पद्मसंभव, ऑल्सो नोन एज गुरु रिनपोचे, और सबसे राइट में है बुद्धा अमितयुस, द बुद्धा ऑफ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पर आर्किटेक्चर, वॉल पर पेंटिंग्स, स्टैचूज, सभी कुछ काफी एस्थेटिक है। पर जस्ट इन जनरल द कलर्स इन नामड्रोलिंग मॉनेस्ट्री एंड द वाइब, इट इज डेफिनेटली अ पीसफुल एक्सपीरियंस। So अभी टाइम हो रहा है 3:45 एंड हम वापस आ गए हैं दोबारा एलिफेंट कैंप पर। 4 बजे तक काउंटर खुलेगा एंड वी होप टू क्रॉस द रिवर बाय देन। ओके, ये उतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा था। हम नी डीप पानी में और हमारे पास गैजेट्स भी, अगर हम एक बार भी गलती से स्लिप हुए तो हमारी लग जाएगी। सो वी डिसाइडेड कि इस्माइल अंदर जाकर व्लॉग करेगा और मैं बाहर से ही ड्रोन उड़ाऊंगा। Standing in the middle of the river. The river is not that deep that you can ride a boat, and it's not that shallow that you can walk easily. So it's somewhere in the middle, and it's becoming very difficult to cross this river to visit the elephants over here.
some pricey elephants they are. Rocks थोड़े slippery हो चुके हैं, तो काफ़ी लोग गिरते जाते हैं और कोई guided like help नहीं मिल सकती है, तो आपको बस लोगों को follow करना है और सामने पहुंचना है. So I crossed that river. It took me almost 30 minutes. Got half myself wet just to watch this baby elephant take a shower. I think it's worth it. Once you buy the ticket, there's a small encampment with a garden and some viewpoints. और सामने ऐसे elephants को display में रखा गया है. Not very happy, like being Forest Department of India, they are promoting this कि ऐसे chained animals को बांध के. They're charging like $10, $20 to take a selfie, $20 to feed them, $20 to touch them. Not very happy that, I mean, let them live and let live. I hope they are like treating them well and keeping them in open and only like putting them here for a few hours. But it looks like the elephants have been tamed. Like whenever I point a camera, they start to pose. So सालों से चलता आ रहा होगा. I don't know if I should recommend you this place, if they are being well taken care of or not. Up to you how your opinions are. हमारे पास टाइम कम था स्टिल वाटर रिवर राफ्टिंग के लिए दुबारे कैंप पर. However, here is how it looks. Now that we are done with Dubare, elephant camp and rafting, I have a bonus location for you, जो कि एक reservoir है. So we are at the fourth location for the day, Chiklihole Reservoir. तो ऐसे प्रॉपर उन्होंने बना रखा है चल के आगे तक जाने के लिए. और यहाँ पर दोनों साइड ही काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. एक साइड मेरे पूरा पानी है इस समय और उसके पीछे सनसेट होने वाला है बहुत जल्द, तो वो बहुत ज़्यादा सही लगने वाला है. और दूसरी साइड काफ़ी ग्रीनरी है. दिस इज़ द चिकलीहोले रेजर्वोयर. इफ यू लुक क्लोजली, पानी इस लेवल पर है जस्ट ओवरफ्लो हो पाए इनटू द रेजर्वोयर. So let's say if I were to come maybe a month after, we could actually see water overflowing in this reservoir. तो I'm sure कि वो तब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, but इस समय average at best. Nothing against people, पर अभी तक हमें almost जितने हर spot पे लोग मिले हैं उसके comparison में चिकली होल पे फिर भी कम लोग हैं. तो मतलब I really think that you can come here to spend a good peaceful evening. And with this, we come to the end of our 3-part series of Coorg vlogs. This place really is a breath of fresh air, with so much to offer, from beautiful landscapes to religious places to some peaceful vibes. We thoroughly enjoyed our time. And would you believe me if I were to tell you there is still a lot we couldn't manage to explore? And in case you're wondering कि आप अपनी कूर्ग की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, तो ये कूर्ग ट्रैवल गाइड जरूर देखिएगा, जिसमें कैसे पहुंचना है, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है और घूमने की 15 से ज्यादा जगहों के बारे में बताया है. Believe me, this will be a one-stop travel guide for your trip to Coorg.